जब शेर शांत होता है तो कुत्तों को लगता है कि जंगल उनके बाप का है. Warm regards to people around the world. My message is loud and clear. On 14th of June 2020, Sushant Singh Rajput was brutally murdered, and what followed was a huge conspiracy and a cover-up. My name is the Professor. I am here to make sure justice is delivered to Sushant Singh Rajput. Me, along with Sushant's army, will stop at nothing till justice is delivered. I urge each and every one of you to stand grounded and raise your voice against the atrocities which happened with Sushant Singh Rajput. One voice, one movement. Justice for Sushant Singh Rajput. Faith it till you make it. Warm regards to all, and welcome to yet another session on Sushant Singh Rajput, his case and his legacy, and in general about what's going on in the movement. But before we move further, it's only fair to thank our host, our our very loving person who behind the scenes work relentlessly day and night, trying to connect people, bind people together. uh, Mima Salgaonkar, ladies and gentlemen, and I would like to thank her for giving us a voice, a platform, so that we can come here and speak our voice, our hearts out. So thank you, मीमा सलगावकर. भाइयों बहनों, आज मैं जर्नल टॉपिक पे बात करूंगा. We will discuss something about Sushant, something about Sushant's murder case, and in general what's happening in the movement, and about the unity, and what exactly is this movement all about. Let me start by saying this, that when the unfortunate news came of Sushant Singh Rajput, a lot of people like me, like you, everybody heard that. And when we went further into details and came across those pictures or video, or got information like distance between the fan and bed, and did our own kind of research in whatever capacity we could, हम सब इस नतीजे पे पहुंचे कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर. Everybody, it's not like this movement started because of somebody got any kind of invitation. किसी को फोन करके, चिट्ठी भेज के या घंटी बजा के तो नहीं बुलाया इस मूवमेंट में. सब अपनी कॉन्शियस से आए. सबको ऐसा लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गड़बड़ हुई है. This is not what is portrayed, what is shown in the media. This is not the truth. And hence, everybody wanted to know that what exactly happened with Sushant Singh Rajput. And they thought that they must raise their voice. And that is the reason from people across the globe started collecting together, forming, you know, a movement, which later now has turned into a revolution. This is my personal opinion. मेरे को ऐसा लगता है. No strangers, we don't know each other, yet what binds us together
is that common factor, that justice, that word, कि सुशांत की डेथ में उसको इंसाफ नहीं मिला। जो दिखाया जा गया था, वो सच नहीं था। And we have our very reasons when we say that. We have been talking about the case in detail, whether it's the spaces on Twitter, whether it's YouTube, various people on YouTube or other social media platforms. Everybody has been raising voice. I would like to appreciate each and every individual for standing, uh, you know, with the family in this fight for justice. Strange things have happened in this movement. A lot of people also got divided. अब वो डिवीजन कैसे आती है? हमने पहले भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। इट इज द डाउट व्हिच इज क्रिएटेड इन पीपल्स माइंड। अब कुछ कुछ लोग डेलिबरेटली कर लेते हैं, कुछ इनोसेंट होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या सही है, क्या गलत है, उनको जो रास्ता दिखा दिए देते हैं, उन पे वो चल पड़ते हैं। द पिक्चर इज क्वाइट क्लियर। इफ यू जस्ट रिमेंबर 14th June 2020, look at the pictures, look at the ligature mark on Sushant's neck. That clearly indicates that this is strangulation not because of hanging. तो अगर बॉडी हैंग नहीं हुई तो इसका मतलब उसको किसी ने मारा है। इट इज वेरी सिंपल। इसके आगे, इसके पीछे, ऊपर नीचे कुछ नहीं। केस यहां पर खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप लिगेचर मार्क देखो। उसके आगे बढ़ेंगे तो आप डिस्टेंस बिटवीन द फैन एंड द बेड देख लीजिए, where the distance is small and the person Sushant Singh Rajput, his height is more. The distance is 5'11", his height is 6 feet. अब आप ये देखिए कि इज इट पॉसिबल? आपको भी ऐसा लगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा। मुझे भी लिगेचर मार्क देख के कुछ समझ नहीं आई शुरू-शुरू में, फिर थोड़ा रिसर्च करा और पता लगा कि ये लिगेचर मार्क तो हैंगिंग का है ही नहीं। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप ही को आपको भी ऐसे ही लगा होगा। एग्ज़ैक्टली द सेम एज़ आई फेल्ट। और जब मुझे लगा, तो मुझे अंदर से कुछ जैसे एक आवाज़ आती है ना कि यार, इसके बारे में कुछ कोई बोल रहा है क्या? अगर नहीं बोल रहा तो क्यों नहीं बोल रहा? Why? Why are people not talking about it? But I saw that people were talking, had started talking about it. And I also saw that the family by that time had filed a FIR in Patna. And I was like, यार कितना मुश्किल होता होगा अभी मुंबई पुलिस से इनको कोई कोई मदद नहीं मिली, and now they have gone to Patna and filed an FIR. This is very interesting. Let's get into this movement. And like जैसे मैंने सोचा, ऐसे करोड़ों, हजारों, करोड़ों लोगों ने सोचा और सब जुट के एक कॉज के लिए आ गए। भाइयों बहनों, सोचने वाली बात यह है कि वो जो कबाल है, द पावरफुल पीपल हु आर बिहाइंड द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ऑब्वियसली कि वो लोग रैटल हो गए। वो कहते हैं ये क्या हो गया? बिकॉज उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि 14 को डेथ हुई है, रात को पोस्टमार्टम कर दिया, नेक्स्ट डे क्रिमिनेशन हो गई। उसके बाद वो संदीप सिंह, आपको याद है वो कैरेक्टर, डूबियस कैरेक्टर, उसने वो डेथ सर्टिफिकेट ले आया, मैटर क्लोज। पुलिस वालों ने अपनी स्टेटमेंट दे दी, कुपर वालों ने उस पे मोहर लगा दी, पोस्टमार्टम बना के रिपोर्ट, कोई वीडियोग्राफी नहीं, नथिंग। पॉलिटिशियंस ने अपना अपना करा, बॉलीवुड वालों ने अपना करा, और सब ने ये सोच के करा कि यार कोई उंगली थोड़ी ना उठाएगा।
कौन बोलेगा? हम लोग पावरफुल हैं, हमारे पास सब कुछ है, अथॉरिटी हमारे साथ में है। Who will speak? So this was the mindset of the cabal. They never anticipated that a movement of this magnitude will start in 2020. भाइयों बहनों, 2020 की बात कर रहा हूं। बट जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये घबरा गए और इन्होंने ये सोचा कि यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज आज इनकी संख्या हजारों में है। ऑब्वियसली व्हेन द मूवमेंट स्टार्टेड इट थाउजेंड, पहले कुछ 100 आए, फिर 1000 हुए, फिर ऐसे कैसे काउंटिंग बढ़ती गई। तो फिर कबाल वालों ने सोचा भाई इनमें कुछ करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? देन दे स्टार्टेड infiltrating people, PR people inside the movement. This is quite obvious. I'm not here and will never point a finger at anybody, any individual. Their action speaks louder than words. Now, whenever I talk about the movement or any kind of revolution in society or in general, it is based on certain foundation. There are two segments, and I maybe please correct me, जो मैं बोल रहा हूं अगर आपको कहीं भी लगे कि थोड़ा सा मैं इसमें कुछ ऐड करना है, तो प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी। आई एम ऑलवेज देयर एज अ लर्नर। आप लोगों से ही सीखा हूं मैं। द टू सेगमेंट्स आर digital protest. Now Sushant in his own words always said this, that social media is kind of a weapon. Is something you can take it in a positive or in a negative way. आप इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे बुरा कर सकते हैं, बट इट हैज अ लॉट ऑफ पावर इन टूडेज टाइम। योर वन स्टेटमेंट काउंट्स। The one statement, ladies and gentlemen, what you put in front of people, they are going to follow that. Even if a few follow, they will tell more, और ऐसे ऐसे एक चेन बन जाती है। Yes, what Mima Salgaonkar is saying here is apologies to the viewers for not showing the picture of the ligature mark we had displayed on Tuesday Darbar. YouTube deletes that live where we had the picture shown. Okay, no problem. It's okay. See, always follow the rules and regulation. Somebody has given that platform, follow the rules. That's it. So I take this movement as एक होता है digital, जहाँ people gather together and try to spread as much awareness about Sushant Singh Rajput as his legacy, as a person he was, and at the same time, more importantly, about his case. That is the aim, right? That is why we came on social media. मैं तो इसीलिए आया, आप भी इसीलिए आए, बिकॉज़ हमने आवाज़ उठानी है, एट द सेम टाइम अपनी चाहे शब्दों में बयान करिए, आवाज़ में बयान करिए, कैसे भी सोशल मीडिया पे आपको अवेयरनेस फैलानी है। लोगों को बताना है कि भाई सुशांत के साथ अन्याय हुआ है। When we say that those words, सुशांत हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, it has to be backed by something. ऐसे थोड़ी रैंडमली हम पिछले 2.5 साल से बोल रहे हैं। So whenever you say something, it has to be backed. And that backing is the information that you have with you. And based on that information, you are saying what you are saying, not randomly. ऐसे नहीं कि अरे भाई मंकी सी मंकी डू बिजनेस हो रहा है।
कि भाई वो बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगा, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला रहा है तो मैं भी चिल्लाऊंगा। नहीं, इस मूवमेंट में ऐसे लोग नहीं है। इस मूवमेंट में वो लोग हैं जो खुद थोड़ी रिसर्च करके, खुद अपना मेकअप, अपना माइंड मेकअप करके, then they entered this movement. Of course, there are many people who are trying to break this movement, but their capacity is very limited. बहुत कम लोग हैं वो. Now, I want to understand. For example, अगर 100 लोगों में से 10 लोग 10 लोग खराब हैं, तो क्या 90 लोग उन पे हावी नहीं पड़ सकते? if if and only if they make up their mind that we don't care, we don't care about anything, we don't care about anyone, we are here with the simple aim to find who killed Sushant Singh Rajput, period. उसके आगे कुछ नहीं. मुझे नहीं पता कि उसने क्या करा, उसने क्या बोला. I don't know, I don't care, because my fight is with the powerful people, my fight is with the authorities. Why are they not coming out with a charge sheet? Why are they not implementing IPC 302? My fight is with them and not with individual. So I would like to ignore. You have time, you spread awareness about Sushant. You talk about Sushant. कुछ भी बात कर लो यार, कुछ भी नहीं है ना बात करने को. फिजिक पे बात कर लो, उसके ऑरा के बारे में बात कर लो. How he used to spend his time, how, what important message, और his कोई भी इंटरव्यू पकड़ लो, उस पे बात कर लो. कुछ भी. If you have nothing to talk about. I, for one reason, have been talking, I don't know how many. अभी तो कुछ दिनों से मैं ट्विटर स्पेसेस पे नहीं जा रहा हूँ. पहले जाता था. ओवर, आई थिंक 700 spaces. Just talk about Sushant. Over and over again. The same, the same points, the same topic. And my reasons are very straight. भाई जब तक मुझे सामने से जवाब नहीं मिलता, मैं बोलता रहूंगा. बार बार बोलता रहूंगा, रिपीट करता रहूंगा अपने आप. कोई सुने ना सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. But I believe there are people. When I say people, I'm talking about authorities, I'm talking about these agencies, I'm talking about media. Everybody is having a watch on the SSR movement. Everybody. Believe me, guys. If you're thinking that these people are not watching, you're wrong. You think that agencies are not keeping an eye on this movement, you are wrong. Perhaps one day you'll get your answer for that. So you just have to go on. You just have to make sure that you finish that line. वो जो finish line होती है ना रेस की, उसको रास्ते में नहीं रुकना. So first is the digital, the digital protest on social media, and the second is the protest on the ground, where people gather together, where people from their comfort zone come out and raise their voice. Because the entire point is that they want to get into the ears of all those authorities, जो authorities who are deaf right now, who's not listening.
who've turned away from this case for the past 2.5 years. ये case transparent. This case is as transparent as a glass. You look at it from any angle, it is that clear that Sushant was killed, brutally tortured, and murdered. The question is how, who did it, how they did it, and why. So that's what I wanted to start this conversation with. That digital protest, people who are raising their voice on social media platform, that is the foundation. And the approach of people when they go out of their comfort zone, I call them proactive warriors who go on the roads to protest कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए कि सुशांत को किसने मारा, कातिल अभी बाहर क्यों घूम रहे हैं, अरेस्ट कब होगा, चार्जशीट कब फाइल होगी, you do a protest. So both are equally important. It's not like one is more important or the other is less important. Both have their own values. ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है. Uh, if you think otherwise, it's perfectly fine. I appreciate each and every viewpoint, everybody's opinion. Hello, all about piano. So good to see you. I still remember the time when there were so many people in the start of this movement. I mean, those people were जैसे होता है ना जैसे अरे भाई साहब कोई हिला नहीं सकता है। अरे दिन में ट्वीट्स होते थे, रीट्वीट्स पता नहीं क्या-क्या मतलब जैसे बुलेट ट्रेन जाती है ना वैसे। बट गाइस ऐसा होता है ना कि हर एक चीज़ सही नहीं हो सकती। कहीं न कहीं अड़चनें आएँगी और इस मूवमेंट में भी वो अड़चनें आई। लॉट ऑफ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला दैट cabal got rattled and a PR team was sent in this movement and that PR team did its job. और हर जगह होता है ये मूवमेंट में नहीं हर जगह इवन इन योर वर्क प्लेस पॉलिटिक्स इज देयर एवरीवेयर इट इज इस मूवमेंट में भी हुआ काफी लोग इस मूवमेंट को छोड़ के चले गए और जेन्युइन लोग जिनको मैं जानता हूं आज भी अगर वो उस पार्ट इस मूवमेंट के नहीं है तो इस मूवमेंट के आसपास है वो बिकॉज वो दिल से जाते हैं किसी कारण अभी मैं क्या बोलूं लेकिन आई नो सच पीपल दैट they're very closely observing this movement. They're praying for Sushant's justice, and they are, even if they have moved from Twitter, they are in other platforms raising their voices in their own capacity. जैसे वो कर रहे हैं. They are doing it. Very important to maintain this movement. You have made something perfectly fine. आपने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो एक दिन वो स्ट्रक्चर गिर जाएगा नीचे आ जाएगा पुराना हो जाएगा दीमक लगनी शुरू हो जाएगी उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एनीथिंग यू डू सो स्टार्टेड इन 2020 द स्टोरी ऑफ टैगलाइंस हैशटैग आया along with taglines and जहां पर ये सब चीजें आई वहां पर जेलिसी फैक्टर आना शुरू हो गया ये क्यों नहीं
वो क्यों, ऐसा क्यों नहीं, आई यू अंडरस्टैंडिंग, ये तुम सही नहीं कर रहे, ये तुम गलत कर रहे हो. But people forgot something, that whatever is happening for Sushant. So people started, instead of appreciating each other, they started मैं. ये जब मैं आ जाता है ना लाइफ में, मैंने ये करा, मैं ये लेके आया या आई, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द अदर पर्सन. और जब आप यूज करते हो हमने ये करा, दैट मीन्स वी आर अप्रिशिएटिंग एवरीवन. सो मैं से हमेशा हम ज्यादा अच्छा लगता है, हमने ये करा. सो जब मैं आ गई, सो इंटरनल फाइट्स होनी शुरू हो गई. आई डोंट नो द रीजन, बट ऐसा होना शुरू हो गया. पीपल स्टार्टेड प्लेइंग द ब्लेम गेम, एक दूसरे पे लांछन लगाना, इसने ऐसे करा, ये देखिए इसका ट्वीट, ये देखिए, ये निकालिए, वो निकालिए. पीपल स्टार्टिंग अब्यूजिंग, ट्रोलिंग ईच अदर, और नीचे हैशटैग लगा के, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, या फिर कोई टैग लाइन लगा के, विच इज नॉट फेयर एट ऑल, which is not fair at all. Why would you do that? You want to solve a dispute, do it offline. DMs में करिए, कॉल करिए एक दूसरे को, कहीं भी करिए, बट कीप दिस मूवमेंट क्लीन. बट ऐसा नहीं हुआ. एंड फॉर दैट रीजन अ लॉट ऑफ जेन्युइन एसेसारियंस, वॉरियर्स, योद्धा, जो मर्जी नाम दे दीजिए, everybody who's in this movement is because of Sushant. So all these names, they started to leave the movement slowly and slowly, because nobody gave a damn कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, because कोई किसी को अप्रिशिएट करता ही नहीं था. And hence there was a tagline war which started. ग्रुप्स बन गए. किस बात के ग्रुप्स हैं? ग्रुप्स फॉर व्हाट? मैं शुरू से बोलता आया, शुरू से, right from the day one, and I stand by it. Whenever anybody is asking for you, for your number, information, join my WhatsApp, Flana tap, ye, wo, please do not fall for that. There is a reason. Why do you want to follow somebody? अब सबकी आवाज एक होनी चाहिए. जब आपकी मांग जस्टिस फॉर सुशांत है, मेरी मांग जस्टिस फॉर सुशांत है, तो अलग कहां से हो गए? क्यों हम जाएंगे अपना रूट चेंज करें? And this is exactly what happened. People started forming groups. I'm not here to take any names or something. This is exactly what happened. People started making their own individual groups, और एक दूसरे को फिर they started bashing each other. Somewhere the main picture was lost. The main intention with which we all have gathered together. People started trolling. अभी भी trolling होती है. People have made handles to troll, just to troll. कुछ नहीं उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है इस मूवमेंट में, सिर्फ ट्रोलिंग करनी है बस. वो ऐसा है, वो वैसा है. आई अप्रिशिएट तो दूर की बात है, बट कमियां निकालनी, निकालो भाई. मे बी योर लाइफ सर्वाइव्स. आपको ऑक्सीजन वहां से मिलता है. जब तक आप किसी की बुराई नहीं करोगे, तब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ऐसे लोगों का ऐसा ही है अपनी लाइफ में. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन 2020, एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट हैपनिंग नाउ, बट देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस. When these fights started happening, then the family was approached and said that you have to take in charge, because people are getting divided. Movement is breaking down.
And hence, the sister, Priyanka Singh, came in this movement, took charge. Now, अब मैं आप लोगों से एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और आप पे छोड़ता हूँ ये सवाल। एक बहन जिसका बाइक खो गया है, जस्टिस कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं मिल नहीं रहा, मुंबई पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, पटना पुलिस वापस आ गई, सीबीआई 2.5 साल से चुप है, उनके ऊपर एक केस करा हुआ है। क्या उनकी जगह, just put yourself in her shoes and just ask one question. Can you imagine the kind of messages she must be receiving on daily basis? Family, friends, neighbors, individuals, आसपास के लोग और ना जाने कहाँ-कहाँ से लोग एक कुछ हुआ जी, कुछ हुआ जी, कुछ हुआ जी. With all that burden, with all that thing in her mind, she started the idea of tagline from her side. Just for the simple reason कि हाँ, सुशांत की फैमिली अब टैगलाइन देंगे. So all those people who have their differences can either join or leave this movement. और जो करना है आपको करो. With that intention कि भाई, now the tagline is coming from someone who's a part of SSR family. And the tagline represents what? अब all those people कान खोल के सुन लीजिए. A tagline is for one, a symbol of unity. SSRians, warriors under one roof. And secondly, it is a way to put pressure on the authorities, on the agencies. When everybody is together, we use one tagline to put that pressure on agencies and authority. Of course, the third reason is that to, to put across awareness on Sushant Singh Rajput. Awareness about Sushant Singh Rajput. लोगों को सुशांत के बारे में बताएं. तो टैगलाइंस कैसे हुए? सुबह की टैगलाइन हुई अबाउट द केस, asking questions, putting that pressure on the authorities, on the government, tagging these people. और शाम की टैगलाइन, spreading awareness about सुशांत, moving his legacy forward. इतना सिंपल है, किसी गधे को भी समझ आ जाएगा. अब तो 2.5 साल हो गए, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ आता तो इट्स टू बैड, राइट? दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस टैगलाइन. अनलेस एनीबॉडी, कोई महारथी हैं जो मुझे समझा सकते हैं, इसके अलावा भी कोई रीजन है? मतलब दिस इज द इंटेंशन ऑफ द टैगलाइन. जो जो पहले लड़ रहे हैं आपस में, मैं दूंगा टैगलाइन, मैं दूंगी टैगलाइन, ये होगी टैगलाइन, वो होगी टैगलाइन, एवरीबॉडी कम्स अंडर वन रूफ विद एजेंडा कि हाँ, सुबह की टैगलाइन ये है, शाम की ये है, एवरीबॉडी फॉलो दिस टैगलाइन. एंड यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ एनी इंडिविजुअल, you are doing it because of Sushant. And the sister is here just because to get back that unity जो बेवकूफियों की वजह से तोड़ दी, टूट गई या खत्म हो रही थी या मूवमेंट टूट रहा था. मैं अपने आप को भी आपके साथ ही जोड़ रहा हूं. ये नहीं है कि मैं अलग हूं. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. सो ये हमारी गलती है. पहले लोग बोलते थे कि अरे फैमिली नहीं है, अरे कैसे नहीं है? कहां से शुरू हुई ये मूवमेंट? कोई बता सकता है मुझे? कहां से शुरू हुई?
नहीं करती अगर फैमिली अगर केस पटना में नहीं अपील करती लीगली सीबीआई के लिए, तो क्या करते? सोचने वाली बात है, सोचिएगा कभी। जितने भी इस मूवमेंट में गुड फॉर नथिंग ट्रोलर्स घूम रहे हैं, ये आपको भड़काएँगे सिर्फ भड़काएँगे। मैं यहाँ पर किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सुशांत के जस्टिस के लिए आया हूँ। और मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि अगर मैंने कभी भी ट्वीट करना है, तो मैंने वो हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत हमेशा यूज़ करना करूँगा। ये मेरा है, मेरा तरीका है। मेरी मर्ज़ी, मेरा टाइम, मेरा तरीका। और साथ में मैं टैगलाइन यूज़ करूँगा, व्हिच इज़ अ मार्क ऑफ यूनिटी, मार्क ऑफ आवर स्ट्रेंथ एंड इफ ऑल एसएसआरियंस वॉरियर्स their tweets come and fall under one one category. दैट्स सिंपल। उसके साथ आप अथॉरिटीज़ को टैग करिए जिसको मर्ज़ी टैग करिए। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अब क्या हुआ कि 2020 में काफ़ी जोकर्स आए, इन्फिल्ट्रेट करा, लोगों को तोड़ने की कोशिश करी, काफ़ी वॉरियर्स निकल गए। अब जो बचे हुए थे, कुछ के आईडी सस्पेंड हो गए बिकॉज़ प्रोवोक करे जाते हैं तब आपको काफ़ी लोग प्रोवोक करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, लेकिन इंटेंशन क्या है? कौन किसको ट्रोल करता है कब? बिकॉज़ इफ अ पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट, इफ दैट पर्सन इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन दिस मूवमेंट और किसी को नज़र आ जाता है, तो वो कहते हैं यार वो जेलसी फैक्टर आ जाता है पहले। और एक ये इन्फिल्ट्रेटर्स, ये लोग क्या करते हैं, फिर ये ट्राई करते हैं प्रोवोक करने का। कहानी बना-बना के आपके पीछे लग जाएँगे, अब्यूज़ करेंगे आपको और जैसे ही आप रिएक्ट करोगे, आपका अकाउंट रिपोर्ट कर देंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड गाइस। 2020 में हुआ, काफ़ी लोगों के साथ हुआ। आईडी सस्पेंड हो गए, जस्ट टू ब्रेक देयर मोरल कि निकलो। आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था किसी का, somebody sent me a tweet of a handle, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन when don't take our kindness for granted। मैं जिस दिन बोलने लग गया, उस दिन मैं आईडी के नाम ले-लेके बोलूँगा एंड देन दैट विल बी द वर्स्ट डे फॉर यू। दैट हैंडल राइट्स किसी तरह हमें ये मूवमेंट, ये एसेसारियंस जो हैं, इनका रोना-धोना बंद करना पड़ेगा। ये टैगलाइन्स का जो सर्कस चालू है, ये बंद करना पड़ेगा। If you if those people and that person is also part of this movement, I want to ask that person, why are you here? If you cannot appreciate somebody, then don't demotivate. Let people do whatever they want to in their own capacity and fight for SSR. अब किसी पर्टिकुलर डे आप देखिए मूवमेंट कितना अच्छा है, मैं देखता रहता हूँ ट्वीट्स। कभी भी मुझे टाइम मिलता है, इन माय वर्क आई एम सो बिज़ी, मैं बीच में कभी दोपहर को यूजुअली लेट आफ्टरनून आई स्टार्ट सीइंग ट्वीट्स, एक आधा कभी कोई ट्वीट देख लूँगा या शाम को देख लूँगा। कभी भी मेरे को थोड़ा-सा भी फ्री टाइम मिलता है और आई एम हैविंग सम टी और कॉफी और समथिंग, एनीथिंग। तो मैं देखता हूँ यार लोग जो हैं इस मूवमेंट में कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे-अच्छे ट्वीट्स लिखते हैं। कभी कोई लिगेचर मार्क के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, कभी कोई अ अ, दिस यही केस की डिटेल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे हैं।
पॉइंट्स ला रहे हैं, की मेकर का पॉइंट्स लेके आते हैं, कोई नीरज की स्टेटमेंट उठा रहा है, कोई संदीप पठानी के ऊपर बात कर रहा है, कोई अक्यूज नंबर 1 के ऊपर बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब। क्या वो गलत है? क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। कभी शीशे के सामने जाके खड़े होके ये पूछिए, आपको क्वेश्चन ही करना है ना, शीशे के सामने खड़े होइए और ये पूछिए, व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन दिस मूवमेंट? व्हाट हैव यू डन? रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स। अरे आप अपने आप से भी तो पूछिए। And then ask this question, what are you doing in this moment? If you are doing nothing, at least you can motivate people. Buck up, guys. Come on. Yes. Give them that positivity. इतना तो कर ही सकते हैं। किसी को शाबाशी दे दीजिए। ये सब। So all these things really matter rather than pointing fingers. I, for one reason, would not. My answers, I'm going to get it from CBI. When they are going to get out and come out with their findings, तो मेरे को आंसर वहां से मिलेंगे। मेरे को आंसर किसी इंडिविजुअल से थोड़ा मिलेंगे। मुझे क्या करना है भाई? हेलो महाराणा का भक्त जी, कैसे हैं आप? आपका क्या था? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज बेटर, टैगलाइन और हैशटैग? दोनों ही बेटर है मैं कहूंगा सर। मैम, जो दोनों ही बेटर है। देखिए, ऐसा है कि हैशटैग इज समथिंग जैसे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, दैट इज परमानेंट राइट, एक हैशटैग, अनलेस देयर इज जस्टिस फॉर एसएसआर, वो भी है। तो ये हैशटैग परमानेंट है। टैगलाइंस, टैगलाइंस अब होती क्या है, एक एक पर्टिकुलर लाइन है जिसको अगर मैं और आप और कुछ लोग मिलके सेम लाइन लिखें तो वो ट्रेंड हो जाएगी। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि सुशांत का नाम, उसके केस की डिटेल्स और उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है ट्विटर पे। अब वो कैसे होगी? वो टैगलाइंस के थ्रू होगी। अब टैगलाइंस में क्या है कि आप अगर सपोज करिए एक इंडिविजुअल जैसे प्रियंका जी हैं, वो रोज टैगलाइंस दे रही हैं और टैगलाइंस देती हैं, फॉर एग्जांपल सीबीआई कम आउट, सिर्फ इतना, सीबीआई कम आउट विद योर फाइंडिंग्स, और सीबीआई वाई डिले इन एसएसआर केस, सीबीआई वाई डिले इन एसएसआर केस। अब इसी टैगलाइन को हम समझ के और ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी विचार धारा प्रकट कर सकते हैं उसमें, ट्वीट्स में। कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, कुछ भी आपने डालना हो रिगार्डिंग केस, आप इसके ऊपर डाल लिए, नीचे आपने टैगलाइन यूज कर ली, साथ में आपने हैशटैग भी डाल दिया। मैं तो हैशटैग भी डाल देता हूँ। सो मेरे हिसाब से बोथ आर इम्पोर्टेंट। अब होता क्या है कि टैगलाइन से हैशटैग जो है वो, अब ये मेरा मानना है, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, बट मेरा मानना है वो कम ट्रेंड होते हैं, जो टैगलाइंस होती हैं वो ज्यादा ट्रेंड होती हैं। अब ये किसी किसी दिन मैं देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ट्रेंडिंग में तीन तीन जगह सुशांत का नाम ट्रेंड हो रहा है। और जब मैं देखता हूँ ये लाइक वाह, अच्छा लगता है ना, मतलब नाम ट्रेंड हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, मुझे अंदर घुसने की बहुत आदत है, और मेरा ये मानना है कि जब भी आप हैशटैग या टैगलाइन जब भी यूज करो तो उसमें कुछ कुछ लिखो। सिर्फ ये नहीं, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके, आज मैं नाश्ते में ये खा रहा हूं, और नीचे टैगलाइन डाल दे, और नीचे डाल दिया
जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, मैंने ऐसी-ऐसी ट्वीट्स पढ़े हैं। समोसा, जलेबी, चाट पापड़ी, नीचे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसका रीज़न भी है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, वो उनकी भावनाएँ हैं। आपको ये भी समझना है, ये लोगों की भावनाएँ हैं कि ठीक है, दे लाइक कि सुशांत का नाम ट्रेंड हो। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली, दीज़ आर इमोशंस जो हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्लाइटली डिफरेंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब कोई इंसान जो इस मूवमेंट में नहीं है, वो लोग जिनको नहीं पता डिटेल्स के बारे में, सुशांत के बारे में तो सभी जानते हैं, नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन डिटेल्स नहीं जानते, सुशांत की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते, केस के बारे में नहीं जानते। वो जब सोशल मीडिया पे आएँ, जब वो ट्विटर खोलेंगे और जब वो देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत या सीबीआई व्हाई डिले इन एसएसआर केस। अब वो इंसान जब उस लिंक पे क्लिक करेगा, तो उसको पहला ट्वीट या दूसरा या पहले 10 ट्वीट क्या दिखने चाहिए? अगर वो ये देखेगा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो करा, आज मैंने ऐसे धोया, समझ रहे हैं आप? सो देन दैट पर्सन विल से अरे! ये क्या चल रहा है यार? मतलब on the contrary, if the same person sees some interesting tweets about the case details, जहाँ पर एसएसआरियंस वॉरियर्स ने ये समझाया हो कि लुक एट द पिक्चर क्लोजली, लुक एट द लिगेचर मार्क, एज पर द फॉरेंसिक डॉक्टर्स इट इज स्ट्रैंगुलेशन नॉट बिकॉज ऑफ हैंगिंग। दैट पर्सन जो बाहर से देख रहा है उस ट्वीट को, वो बड़े ध्यान से देखेगा, वो कहेगा, ओह माय गॉड, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं, ओह माय गॉड, ये तो सुशांत के साथ ऐसा हुआ था। हमें वो पिक्चर दिखानी है उन लोगों को, हमें आपस में बैठ के किट्टी पार्टीज नहीं करनी। आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो खाया, नोबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज। सब ने कुछ ना कुछ खाया होगा, सब ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी, डिनर भी। वी नॉट इंटरेस्टेड। वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस, दिस इज द राइट वे। आपको आप एक ट्वीट करो, कोई बात नहीं, आप ज्यादा नहीं कर सकते, ना करो, एक करो, लेकिन सब्सटैंशियल, कोई उसमें अहमियत होनी चाहिए, मतलब समथिंग कॉन्क्रीट। सवाल पूछो आप अथॉरिटीज से, कुछ ऐसा लिखो बाहर वाले लोग और जुड़े इस मूवमेंट से। जब वो उस टैगलाइन को प्रेस करके, when they enter that tagline, they should find information regarding that tagline, regarding सुशांत सिंह राजपूत। उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स, यू नो अप्रिशिएट, लोगों की इमोशंस हैं, वो सुशांत की पिक्चर्स डालते हैं, अच्छी बात है, डालिए, बिल्कुल डालिए, और डालिए, मैं तो कहता हूँ, अवेयरनेस होगी ऐसे। बट ट्वीट्स में थोड़ा ये भी लिखिए केस के बारे में, और शाम की जैसे टैगलाइन होती हैं, आप सुशांत की लाइफ के बारे में लिख सकते हैं, उसके कोई इंटरव्यूज डाल सकते हैं, मीडिया कवरेज डाल सकते हैं उनके। शाम की टैगलाइन जो होती है, इट टेक्स हिज लेगेसी फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। अब काफी लोग हैं, वो कहते हैं कि ट्विटर पे जस्टिस नहीं मिलता। अरे आवाज उठाते हैं, सोशल मीडिया is a tool for all those fools who do not know that. Well, you need to get educated. Social media is a very strong, powerful tool. Governments बदल जाती हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? So it's very important. आपकी एक आवाज, आपका एक स्टेटमेंट जब आप ट्विटर पे डालते हो, तो अब तो ट्विटर ने ये भी ऑप्शन दे दिया है कि आपके ट्वीट को कितने लोगों ने देखा। जरा ध्यान से देखना, डोंट गो ऑन कि कितने लोगों ने लाइक करा,
रीट्वीट करा। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि कितने लोगों ने देखा। देखा ना, माई जॉब इज डन। मैक्सिमम नंबर लोगों ने देखा, माई जॉब इज डन। आई डोंट केयर अबाउट कि लाइक किसने करा। हाँ, कोई रीट्वीट कर देता है, अच्छी बात है। और भी अथॉरिटीज को टैग करा हुआ है और जाएगा उनके पास ट्वीट, वो ठीक है। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पीपल हु सॉ माई ट्वीट। आपकी किसी एक ट्वीट को देख के अगर कोई इंसान इस मूवमेंट में आता है, तो अच्छी बात नहीं है क्या? इट्स गुड ना, इट्स गुड। दैट्स हाउ यू क्रिएट अवेयरनेस। और कैसे करेंगे? अवेयरनेस कर किस लिए रहे हैं? ताकि और लोग इस मूवमेंट में ज्वाइन हो। हम लोगों ने सबने सबको मालूम है कि इस केस को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। गाइस, पूरी कोशिश हो रही है किसी तरह इस मूवमेंट को ब्रेक कर दे। देयर आर पीपल who are inside this movement trying their best each and every day, somehow break the morale of people, strong people, whether it's digital or the ground protesters, जिनको मैं प्रोएक्टिव वॉरियर्स बोलता हूँ। उनका मोरल डाउन हो जाए, किसी तरह वो छोड़ जाए। लेकिन मैं अपनी कोशिश करता रहता हूँ, कभी भी टाइम मिलता है, दैट कहीं मेरे को ऐसा लगता है तो मैं आई जस्ट गो एंड स्पीक टू दोस पीपल एंड जस्ट टेल देम दैट what is their importance and why are they here, irrespective of whoever puts the blame। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर का चूल्हा, मेरे घर की जो पैसा है वो नहीं दे रहे। मैं खुद मेहनत से कमाता हूँ। So I have the right of my own opinion, and nobody can change that। People often relate me with lot of people। ये यहाँ से है, ये वहां से है। मैं कहीं से नहीं हूँ। मैं मैं इंडिविजुअली आया हूँ इस मूवमेंट में। मेरा एक अपना ओपिनियन है। हाँ, मेरा और आपका ओपिनियन मैच कर सकता है। ऑफ कोर्स इट कैन। बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप और आई एम favoring any individual। Yes, I like individuals who have a good mindset, who are very clear with their views। तो उसमें उसमें कुछ गलत नहीं है। सो बोथ महाराणा जी, आपका जो कमेंट है, टैगलाइन और हैशटैग बोथ आर इम्पोर्टेंट। टैगलाइन भी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड हैशटैग ऑल्सो। हैशटैग वो वाला होता है, हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर दिशा सालियान। पीपल कीप आस्किंग मी ईच एंड एवरी डे, हेलो यादव साहब, कैसे हैं? रोज पूछते हैं, कोई ना कोई किसी का मैसेज आ जाता है और पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इन दिशा सालियान केस। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं ही हूं जिसने कल सुबह एक सेट फॉर्म करनी है और कहना है कि जाओ। अरे, हो गई, हो रही है, बोल दिया ना, हो रही है। जल्दी होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं। मेरा भी ये क्वेश्चन है, इफ अ सिट हैज बीन कॉल्ड फॉर एक्चुअली, देन वेयर इज इट? 22 दिसंबर को आपने कहा था कि सेट फॉर्म होगी, अभी तक हुई नहीं। मेरा भी है। बट मैं क्वेश्चन एक बार पूछ लूंगा रिस्पेक्टफुल वे में, बार बार नहीं पूछूंगा। अरे, ये तो कुछ कर नहीं रहे, अरे ये तो हमारा उल्लू बना रहे। नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे। देखिए, विधानसभा में या कहीं पर भी, पार्लियामेंट में, कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट आप अनलॉफुली नहीं दे सकते। अगर आपने ये कहा है कि एक सिट बनेगी, दैट मीन्स वो बनेगी। हाउ मच टाइम इट विल टेक, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। बट आई एम हैप्पी विद दिस न्यूज
इससे पहले क्या था? इससे पहले क्या था? इससे पहले तो सिर्फ़ एक चीज़ थी कि दिशा का केस जो था, वो बंद कर दिया। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट अंडर सुसाइड उसको बंद कर दिया था। और ये सिर्फ़ हम एसएसआरियन चिल्ला रहे थे, डिमांड कर रहे थे जस्टिस। दिशा की फैमिली भी नहीं कर रहे थे। सिर्फ़ एसएसआरियंस। तो आपको तो बहुत गर्व होना चाहिए कि भाई हम लोगों की वजह से ही तो ये इस नतीजे तक पहुँचे हैं आज, कि ये सिट फॉर्म हो रही है। कोई बात नहीं यार, जहाँ इतना इंतज़ार करा है कुछ दिन और सही। देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन सिट विल बी फॉर्म्ड 100% पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। वो होगा। We just have to be a little patient. Little patient. Mimia, sorry, Mima Salgaonkar had a question. She raised her hand. हाँ, मीमा, आप बोलो, लिखो, टाइप करो बेटा। क्या क्वेश्चन है आपका? अरे विनोद भाई, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। आर पॉपुलेशन इज सो मच। 135 करोड़ लोग। जजेस देख लीजिए आप कितने हैं। कोर्ट में जाके केसेस कितने पेंडिंग है। आई इफ यू आस्क मी, आई डोंट वांट टू लुक बिकॉज लास्ट टाइम आई लुक वाज करोड्स केसेस पेंडिंग। लोगों को लोग 2-2 3-3 साल जेल में सड़ रहे होते हैं, उनकी कोर्ट की डेट नहीं आ रही। गाइस, कभी सोचा है आपने? सड़ रहे होते हैं अंदर, कोर्ट की डेट नहीं आ रही होती। हमारा क्या करें? लॉ इन आवर कंट्री is such. Yes, there should be judicial reforms. There is no doubt about it. There are many loopholes in our system, in our law, in our judiciary. तभी तो ये चालाक वकील जो हैं, ये आपके नाक के नीचे से मुजरिम को निकाल के ले जाते हैं। अब देखिए, उनका प्रोफेशन है ये, ठीक है? मैं किसी पे उँगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हमारे लॉ में लूपहोल्स हैं और हमारे मंत्री हम सबको मालूम है। कुछ ईमानदार हैं, ज़्यादा बेईमान है। बिल्कुल, बिल्कुल बेईमान है। ये हर 5 साल बाद आ जाएँगे आपके घर के आगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएँगे। अगला वोट आप हमें ही दीजिएगा। 5 साल बाद। बीच में कहीं इनकी शक्ल नज़र नहीं आती। मेरी अपील है हर एक उस इंसान से, भाइयों-बहनों, अगली बार कोई वोट माँगने आए ना, उनको उनको उनके सामने हाथ जोड़ के प्यार से पूछिएगा, आप मेरी लोकेलिटी के लिए, देश का देश के लिए मत पूछिएगा, बिकॉज़ वो जो मंत्री है ना, वो सिर्फ़ आप अपनी लोकेलिटी बोलिए, अगले 5 साल में आप मेरी लोकेलिटी के लिए क्या करेंगे? क्या विचार है आपका? देखिए, वो क्या जवाब देता है। और अगर आपको उसका जवाब पसंद आया, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन-सी पार्टी का है, मैं तो वोट उसे ही दूँगा और आपको भी कहूँगा उसे ही दें। बट डू आस्क दिस क्वेश्चन कि आप करेंगे क्या? क्या हैं आपके प्लान्स? वोट माँगने आ जाते हैं बस ये। संतरी से लेकर मंत्री तक, मोस्टली। मैं तो कहता हूँ ये मंत्री हैं, जो करप्शन की जड़ है। नीचे वाले क्या करें यार, जब ऊपर वाला ही ऐसा है।
एक घर में एक सेठ है, अगर वो सेठ शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, तो उसके नौकर-चाकर देख के क्या करेंगे? वो भी कहेंगे, "अरे यार, हमारा तो सेठ ऐसा है, वो जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है।" वो भी करना लग जाएँगे। लेकिन अगर वो सेठ जो है, इफ ही विल नॉट if he'll not drink or do any, you know, we play cards और जुआ नहीं खेलेगा वो, तो नीचे वाले भी 2 बार सोचेंगे कि नहीं भाई शराब पी के नहीं जाना, जुआ नहीं खेलना, कहीं मालिक को पता ना लग जाए। समझ रहे हैं आप? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सिस्टम को चेंज करने के लिए यू हैव टू बी दैट चेंज। भैया आप ये नहीं कर सकते कि आप ड्राइव कर रहे हो और थोड़ी ओवर स्पीडिंग हो गई, तो पुलिस वाले को अरे साहब ये ₹100 लो। और फिर ऑनलाइन आके ज्ञान दो। अरे! इस देश में भ्रष्टाचार बहुत है। जाइए यार, कोई हक नहीं है आपको भ्रष्टाचार पे लेक्चर देने का। अभी आप पुलिस वाले को पैसा दे के आए। समझ रहे हैं आप? टू ब्रिंग दैट चेंज यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट चेंज। नो मीन्स नो। मैं रिश्वत नहीं दूँगा, आई विल नॉट ब्राइब एनीबॉडी। मेरे काम को अगर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो बी इट, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। किसी ने चालान करना है, कर लो यार, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है यार। यू मेड अ मिस्टेक, वेल भुगतो। बट वंस यू गिव दैट ब्राइब, आप अपनी सारी सोसाइटी को खराब कर रहे हो। एंड यस, यू आप खराब कर रहे हो सोसाइटी को। और वो एक आदत पड़ जाती है, इट बिकम्स एन एडिक्शन। आपने एक बार रिश्वत दी, आप बार बार दोगे, बिकॉज यू विल से आई हैव माई वे आउट, दिस इज द वे आउट एंड दिस इज द शॉर्टकट। हर काम में आप ब्राइब देना शुरू कर जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको देख के बाकी लोग, एंड हेंस द एंटायर सिस्टम। लेने वाला, देने वाला, दोनों दोनों गलत है। And of course, it's punishable. But besides the point, Hello, Devil sir. How's it Hello, going? Professor. Can you hear me? Yes, yes. Yeah, so I don't know the actual what the topic is. So since Mima asked me to join, so I obliged since I couldn't refuse. No, we're just talking in general about the movement, about the importance of tagline and hashtag, and just be united. And uh, just generally, we are talking about today. Not, I agree. I agree in principle. I was listening, so yeah, I agree with your points. So yes, maybe there's one slight area where I am not completely convinced. Putting pressure on the authorities, I don't know how far it's effective. Yes, awareness, I agree. Creating awareness is there. Pressure, I don't know because CBI doesn't have a Twitter handle, and these ministers, yes, the only negative fallout we have been seeing is I know the people got blocked, but PMO, HMO को तो हम करते हैं, शायद they probably got like thousands and thousands of tags, messages, but response, I don't know. I mean, it's like at least something to convince that it's working. Okay, it's fine. We can keep trying, but public pressure, okay, it's probably a combo of multiple things, like ground protests, and people have been calling the authorities. And maybe one more thing that could be tried is maybe in small groups we could meet, I mean, at least local representatives, if not directly the top level ministers. But I don't know how effective that would be, but direct contact, maybe at least tell them that this issue is important to us and we feel the need that this is a priority. So maybe they already know it, but they choose to be ignorant. But just thinking of other ways and means to get something going. I know that the ultimate authority is the Supreme Court and the judicial system and the CBI. And as non-plaintiffs, our leverage is limited, but we've got to try what we can try or what is within our bounds. I agree with you, Dual Sub. My only question is that when we tag the agency, as you said, CBI does not have a handle. Of course, they will not have a separate Twitter handle.
investigating agencies hai. They would not showcase their findings and investigation on social media, but they do come under DOPT, Department of Pension and Training, और उनका handle है DOPT का. So the whole idea of tagging these agencies is the whole idea is to spread awareness about Sushant's case and his legacy. That I agree. Yes, और, awareness. और Yes, साथ में we tag these influential people like Kiran Rijiju हो गए, सारे बाकी ministers हो गए, PMO और HMO. Of course, a collective effort of so many people, it cannot be just blindsided. कि वो बात अगर होगी, अगर बात करेंगे सोशल मीडिया पे सुशांत के बारे में, तभी चर्चा होगी, तभी लोग कहेंगे यार इसके बारे में कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है. Of course, all those answers we are going to get only from one particular place, and that is CBI. When CBI comes out with definitely. their findings, till that time, the kind of pressure we can maintain is ऑन सोशल मीडिया. तभी मैं बोल रहा हूँ ऑन डिजिटली सोशल मीडिया पे हम कर सकते हैं, या फिर द सेकेंड वे इज द प्रोटेस्ट which has to happen in large numbers in front of the CBI. Yes, yes, that is true. And yes, there are many SSRians, and it would be great if there was more participation in ground protests. Unfortunately, मैं भारत से बाहर हूँ, so I wouldn't be able to do justice to that. So, but yes, definitely the people who are closer. I mean, if there was more participation, I know it's easy to preach than to practice, but it would be more impactful if there were larger numbers in terms of ground protests in addition to Absolutely. what's being done. And yes, I applaud whoever is doing the efforts. कोई भी हो, मतलब दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, मुंबई में, and they're doing a great job. So yes, that has to be appreciated. In addition to that, and one more thing, I was just thinking out कि ये social media में जो है, more than pressure, it is like to counter the negative that's going on, because the other side, as you know, is very proactive. They don't miss a chance to just push their propaganda. So yes, this serves as a effective counter, provided we fight with facts. Again, the reason I say this is because there's many narratives which people have been using that have proven to be like we don't know what the source is, and some of them have been based on stuff that has been circulated. We could do a separate session on that, but there are a few that I could point out, but that's not within the bounds of this now. That काफी कुछ है, so maybe we can have a separate discussion on that. So, but at the same time, fight with facts and basically counter the negatives. So yes, we need a counterbalancing force, because otherwise, it's like the dominant narrative which kind of influences proceedings. I agree that Twitter is a very limited means, because Twitter ke bahar bhi hai, you have other means like mainstream media has pretty much given up. There was a brief flicker of activity when we had the Rup Kumar Shah ji coming out, but after that it's gone silent now. So yes, to keep it alive, Twitter and whatever other means, whether it is Instagram ho, yeah, just uh, talking to people physically and convincing them, that all of these are good efforts. But yes, it all goes together, and maybe the collective result of our efforts is things might change. But yes, it is a waiting game of attrition, and maybe it's also about the other side that we are against, probably is playing a game of attrition. Ki, people will just give up and leave, and unfortunately it has come true for some cases. But yes, it is a game of patience and attrition, and yes, supporting whatever efforts are needed to sustain this campaign. That's what I have to say. You're absolutely right, sir. Duin साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. Now there are two ways of looking at it. One is that there has to be awareness on social media, and all those people who are connected in this movement digitally, they are doing their part. And but the need of the hour today, as per you, and I completely agree with that point of view, the need of the hour is to actually go on ground and have a ground protest in front of CBI headquarters, which is happening on the 13th and the 14th of June. And everybody, I think, is already deciding on that these two dates, whether it's on the 13th or the 14th of June. So, but again, uh, that protest has to be in large numbers.
and people, if possible, a family member has to be present there. Now, I have my reasons for saying that, because when a family of Sushant Singh Rajput is present there, then probably the media will also participate, and the more the coverage of the protest, the better for the movement. तो मेरे हिसाब से डिजिटल प्रेजेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हियर इन दिस मूवमेंट. इट स्प्रेड्स अवेयरनेस. हाँ, टैग करते हैं एजेंसीज को, मिनिस्टर्स को, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, दैट्स सेपरेट थिंग, बट द अवेयरनेस इज गोइंग. All those people apart from those ministers and authorities, they're watching what's happening on social media. So digital presence is also required. At the same time, the ground protest is a must. Another very interesting thing, I got it a few months back, and a few people followed also. I think Italy में हुआ था ये. मेरा ये suggestion था that all those people who are participating in this movement overseas, from overseas, what they can do is they can have a peaceful protest in front of the Indian embassy in their respective countries, wherever they are situated. The impact is going to be huge, because when an international media does a coverage there, or writes even an article or a small one, so it puts a lot of pressure on the Indian government. तो मेरा ऐसा एक सजेशन सा था, and I think a few people in Italy, they had gone to you know they did a protest also. तो ऐसा कुछ अगर हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा है. Whatever way, whatever capacity, people can think of any idea and contribute towards this movement. And of course, there is another very strong reason, is that you want to keep people in this movement together, because of lately I'm seeing that people are just leaving this movement, and because of reasons, लड़ाई हो रही है, एग्री टू डिसएग्रीज हो रही हैं, काफी कुछ हो रहा है. तो just to kind of motivate them in some way or the other. Yes, disagreements, I mean, that is human. I mean, no to people, I wouldn't say no to people. It's possible that people don't see to eye to eye. We can be respectful, and but kabhi kabhi ho jata hai, and the emotions or whatever it is, bias, or people tend to cluster in groups, and misunderstandings do happen. I mean, although the mission is the same, but that is an unfortunate reality. It would be nice to have one united effort, but as that's probably too idealistic, and no, there are differences, so it's not possible for everyone to band together, and we have to live with that. So we can still have differences, but without attacking each other. But I mean, that's happening, so that's human. It's what can we do? We're human beings, so that is bound to happen. Yes, minimizing such conflicts would be the way to go, and how to do it and all, I would leave it to people's intelligence. We can't go around, preaching, because that doesn't get taken nicely. So we probably just leave it to people's better senses, and that they will eventually, these differences would get minimalized, eliminated would be great. But that's one thing. And yes, your point was about whatever we can do to take this along. And the other thing is, yeah, a lot of stuff gets talked about, politicians infiltrating this and exploiting it. But my point is, this campaign was already made political right from the beginning, when the state governments made it a state versus central issue, due to which it already got polarized, wherein you had people of X party versus Y party kind of, attacking this thing. Like, let's say, for example, you have a central party, so you have people who are uh, not who are not favorably inclined towards the central party, would start making it as something like, let's say, this is an IT cell operation, or they started spinning it as that. Whereas the truth is that it's nothing like that, because you have people from other countries as well. So it definitely cannot be an IT cell thing, but it has had the political dimension. Yes, there are possibilities of political parties using it to their advantage, but the unfortunate reality is that it has been tagged as political, so that you really can't escape that reality, because वो तो आप हम पे थोपा गया है कि it's not of our own making. But yes, it's been
portrayed that way. Okay, this is a political thing, and this is X party. I'm not going to put the names, like X party's IT cell is managing this thing to cover up for their failures, and that perception has to change. It's not easy to change, but yes, we have to accept the fact that that is there. So there will be a political aspect to it. How we work around it or manage it to get the apolitical side of it to be seen more than the political, that's another challenge. But yes, that is also a reality that we have to contend with and somehow get over a hurdle, I'd say. And for that very reason, Buell sir, I had actually told people who were doing these ground protests to actually approach a local BJP office and try to get them in the protest somehow. And we already know people like Mamta Kale and Preeti Pandey, and these are people. And if you approach them and you get them in your protest, uh, things will start to roll. And these are insiders who can give us a better picture. Okay, what's happening inside BJP, and क्या हो रहा है, and we'll be able to help you in the protest also more. Because Yes, we देखिए don't. हमारा काम क्या है, और Sorry, यही Professor. तो काम है ना. I Yes, mean, we do just need the influential voices are definitely needed because मैं दूसरे YouTube channels देखता हूँ नॉन एनएसएसआर एंड कोई भी डायरेक्टली बात नहीं करते नेवर टॉक डायरेक्टली अबाउट दिस बट दे मेक रेफरेंसेस की सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसे हुआ है बट nobody really wants to get into the details although probably everyone knows at some level but they just talk in hints इशारों में बात करते हैं they never really make a direct reference or go explicit about it. So there is some level of awareness but there's this reluctance among other YouTube channels. I'm not saying that YouTube channels are absolute but at least as a means of awareness. But there's like other sources that probably know, but they don't want to directly reference it. This was a frustration I once expressed long time back on my Twitter, but that's not the main thing. But these are just some aspects that we need to be aware of. And ho to raha hai, man. We can't completely ignore it, but being cognizant of these while we formulate whatever game plan is one possible way forward. absolutely. I mean, another interesting idea was that before this protest, which is going to happen a few months from now, either on 13th or the 14th of June, very interesting thing is that I told them that there has to be an advertisement in the papers. If you can get that advertisements, and why said that was today, as of now, our numbers are less in ground protest. हम जंतर मंतर पे देखते हैं काफी लोग करते हैं अपने एफर्ट्स, बस अगर उन एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा, देन फिर वहां पर थोड़ी निराशा होती है. So, तो Professor, if I may interrupt, sorry, ये या जनता में से एक interesting point आया. So, if हाँ, we know we were दो ground protests हुए Delhi Warriors के, I'm not going into the politics of that. 14 को हुआ था, 15 को हुआ था. 16 को we had our Olympic medalists have a protest, the same Jantar Mantar. And if you see the media coverage, मतलब all the media houses that come in, so it was a little saddening कि SSR के project protest को, there's hardly any coverage. But that was probably a bigger issue, like with the wrestlers and who have participated at the represented nation. So उनके issue को there was a lot of media coverage, and I think it continued for several days. But the contrast in coverage or how the mainstream media treated it, that was a little unfortunate. But I don't know, it might just be a combination of maybe political bias, also the numbers, the lack of numbers. Maybe if there were more people, but because same place, वही जंतर मंतर में protests हुए, two separate protests. So why this difference in coverage? वो मेरी समझ में नहीं आया, but maybe there are more ground realities that I might not be aware of. But the contrast was kind of striking. That's what I had to say. Sorry, please continue. नहीं नहीं, you are absolutely right. But the only difference here is that what I what I find is कि ये जो wrestlers है, they have a union and they have contacts with these media houses. Now I don't know कि हमारे जो ground protesters हैं, इनके कितने contacts हैं. But इन लोगों को they have to play it smart now.
फॉर एग्जाम्पल पेपर में ऐड निकाल लीजिए कि भाई इस दिन सुशांत के लिए हम लोग एक मूवमेंट हो रही है, या फिर कुछ रिमेम्बरिंग सुशांत सिंह राजपूत, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, फॉर फॉर द सिंपल रीजन दैट इफ योर number count is less, then maybe seeing this advertisement, more and more people who are from outside this movement and are fans of Sushant Singh Rajput, they will join in as well. At the same time, the media house will also keep an eye कि हाँ यार ये advertisement, that these advertisements are running, तो उसको देख के मीडिया भी कवर करने आएगी. That's why I said ना, ड्यूल भाई के, you know, a member of the family is very important. अगर प्रियंका जी या मीतू जी अगर वो प्रोटेस्ट में आती हैं, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, ट्वीट करते हैं उसके बारे में, तो उनके ट्वीट को मीडिया कवरेज भी मिलेगी, मीडिया वुड बी इंटरेस्टेड एंड पीपल विल स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स. तो उनका वहां पर मौजूद होना मेरे हिसाब से विल बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट प्रोटेस्ट हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ सीबीआई. जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट अच्छा है, लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इम्पैक्टफुल जो होगा, दैट इम्पैक्ट इज ओनली गोइंग टू बी व्हेन यू डू अ प्रोटेस्ट आउटसाइड सीबीआई. और इस डर से नहीं करेंगे करना कि आपको परमिशन मिली है कि नहीं. सीबीआई के सामने आपको कभी परमिशन नहीं मिल सकती. आप लिख के लीजिए, इट कम्स अंडर अ रेड जोन. आपको कभी नहीं परमिशन मिलेगी. और आंदोलन जो होते हैं, प्रोटेस्ट जो होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि भैया आपने ये नहीं देखना कि यार कि मुझे परमिशन मिली है कि नहीं, सिर्फ वहां चले जाना है. द पुलिस माइट डिटेन अ फ्यू, बट दे विल डू इट as per protocols for a few hours, and then they let you go after explaining you the protocols. वो स्टेशन ले जाते हैं या कहीं वैन में बिठा के आपको प्रोटोकॉल समझा के और वो आपको भेज देते हैं. बट ऑल Definitely, दिस, मतलब numbers तो matter करता है. I mean, you need numbers. it has, yeah, मैटर करेगा सर. नंबर भी मैटर करता है सर, एंड द प्लेस वेयर यू आर डूइंग द प्रोटेस्ट ऑल्सो, एंड कौन कर रहा है प्रोटेस्ट, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अगर सुशांत की फैमिली से कोई आता है तो माइलेज और भी ज्यादा मिलेगी, इम्पैक्टफुल और भी ज्यादा होगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, 14 को हुआ, उसमें कम लोग थे, 15 को हुआ, उसमें थोड़े ज्यादा थे. आई एम नॉट डाउटिंग their intentions or something, or pointing a finger. I am saying कि these are efforts which are put by people, and अगर उसके रिजल्ट नहीं आएंगे बाहर तो उसका फिर फायदा नहीं होता है. मैं ये कह रहा हूँ. Yes, I तो mean, those are good points. And yes, family के आने से there will be a lot of impetus, and maybe coverage भी होगा. I mean, it's not coverage that's the ultimate goal, but more as a means towards an ultimate goal. So, definitely all those, definitely all good points. And whatever else, I'm sure SSRians are smart, and they can think of more points. And collective effort to hai, and let's see. I mean, until then, until we have another breakthrough, or maybe another Roop Kumar Shah moment, I mean, this is probably the way things have to go. Yes, we could be carry on and be nicer to each other, even if you're in groups, and not have infighting. But chalta hai. I mean, it's bound to happen. Human nature and differences, but let's hope we can tide over the differences and move on. तो मेरा बस यही कहना. And one more thing, Professor, I came in is मुझे काफी लोग बोलते हैं कि तुम DM के शेर हो. मतलब you talk a lot in DMs, but spaces में नहीं बोलते हो, in lives में नहीं बोलते हो. It's just that I'm also have a little some reservations. मैं जब बोलता हूँ तो how would I sound and all. So I'm just so today when Nima said please join, so I said okay, this is a good opportunity, and मैंने सोचा चलो I'll also come and voice. And the other thing is I'm also wary about क्या बोल देते हैं, because आजकल with the controversies वो recording करके what you say kind of gets spun out of context, so you have to be careful with words. At the same time, you have to be able to make your point effectively. So just those things that play on the mind. But I'm glad I joined, and hope to join future sessions as well. always a pleasure to have you, sir. Listen to your thoughts, and बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन करा सर. And whenever you feel like, you're most welcome to join. And those people will, if they want to take a dig at you, somehow, trust me, they will take a dig at you. And
It's okay. It's perfectly fine. जिसको जो बोलना है वो बोलेगा. But you should keep doing what you're doing, sir. Very interesting comment by Mimia. Mimia, I have an idea. Why not we go bigger protests, which is happening for a different cause, and shout justice for SSR there. नहीं, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, because imagine there is a protest for wrestlers going on, जैसे डुइल सर ने अभी कहा, एंड वहां पर आप बीच में जस्टिस फॉर सुशांत ले जाओ, तो वो कहेंगे कि भाई ये तो प्रोटेस्ट रेस्लर्स का है. यस, यू कैन स्प्रेड अवेयरनेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग pamphlets or something टू दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट. वो अवेयरनेस आप कर सकते हो, बट किसी के प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपना एजेंडा चलाना ना, हमें एंटरटेन करना चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा भी हो सकता है कि सुशांत के प्रोटेस्ट में अगर कोई और आ जाए, तो वो भी हमें भी नहीं अच्छा लगेगा. वैसे ही उन्हें भी किसी और को अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके प्रोटेस्ट में जा रहे हो. और जस्टिस फॉर एसएसआर, ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, पैम्फलेट छपवा के या फिर क्यूआर कोड बना के, और समथिंग ऑफ, यू नो, समथिंग ऑफ on the same lines, you can do that, and spread awareness, but Yeah, that is not. slightly tricky because maybe Suchataki, if there's something which has some commonality, maybe we could join hands. But as you said, I mean, it's quite possible that in future you might have someone join your project protest SSR protest with something which where you might not have something in common. So yeah, maybe keep a respectful distance. We respect their whatever they're protesting for, and as long as it's not against any laws or against the nation. At the same time, if you have something in common, yes, we can try to spread awareness, but combining may not always be a good idea. Hmm. Let's take this question of Arun RT sir. Hello Arun ji, kaise hain aap? Question is, keeping in mind health of Papa ji, why can't we approach SSR's father to join the protest and also approach court CBI for status of the case? Arun ji, uh, of course that's a option. I would use the word option because that's the option with the family. Uh, People who are close to the family physically, आप जाके बात कर सकते हैं उनसे, because they have the right to know, since Priyanka ji has already tried their best to approach CBI and not getting any reward. uh, then the only option left is, and the right way is to uh, go to the court and ask and tell them basically that, I'm trying my best to get in touch with CBI and they are not responding, so I'm left with no option. So this is one option where I would uh, you know like like to say that this is also an option on the table and a very good option. तो ऐसा कर सकते हैं, but I leave that part to the, you know to the family, and what best they have to do while with consulting their legal team. अगर आपने legal team से consult करके, और if they want to approach the court, they can do that. Why not? Yes, this is something where it is, yeah, it's basically up to their will. They can't be compelled, and probably it's a point of last resort. Well, it's probably like when all else fails, go through. Now, yes, there have been questions raised as to क्यों नहीं जा रहे, why they're not going to court. We really don't know the whole picture as to what the compulsions are, but that is an option which they and probably only they can exercise since they are the plaintiff in this case. So yeah, that's Yeah, a privilege which they have, and I don't think any one of us can really do much apart from just suggesting this. absolutely. So, Dul sir, my only thing, with this question was that there are two ways of putting across your point of view. One is that you asking the family, why are you not approaching Supreme Court? Now that's a rude way of asking. If you ask me, this is my opinion. And one is that you are telling the family who already knows that you have an option to approach
Supreme Court, which is the right thing to do, as you have already tried approaching CBI and not getting any response. Now, these are two ways of approaching. आप family को अगर आपने if you have to approach the family, so you do it in a way that it doesn't hurt their sentiments, because already they are going through a lot of trauma, right? तो वो अब सुशांत की डेथ हो गई है, उसको जस्टिस मिल नहीं रहा है, उनके ऊपर केस भी है, ऊपर से लोग भी सवाल करेंगे, तो वो सही नहीं है। तो दैट्स माय वे ऑफ थिंकिंग। आप लोगों की अलग होगी, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच द फैमिली already knows about, approaching the Supreme Court. So I'm sure they have their own ways of approaching. When they'll approach, I don't know. मेरे को नहीं पता. And मेरे को इतना मालूम है, they have this option. And neither I want to ask कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं. I mean, she's a Supreme Court lawyer. I am sure that she knows that what is the right thing to do. So let them handle their affairs, and let us do what best we can to show our support and towards this justice movement. ऐसा मेरा मानना है, guys. So until anybody has any other point of view. Yeah, I'll So, just add my little bit and then I'll kind of go back to listeners. So, yeah, so my views pretty much concur with what you have. It's like they probably gotten this suggestion a million times and they must be sick of it. And yes, they must be aware of what steps are needed to proceed. So, yes, we have to leave it to them. We can be their support. Of course, hypothetically, when this goes to trial, that's when the most support will be needed. That's when the Twitter and all this stuff will be more powerful because we're going to push harder. But then again, that first step of when they want to do it or how they want to do it, it has to be left to them. They are the plaintiff, and probably with more understanding about the aspects, because what we know is kind of a very limited stuff based on public domain. Maybe there is more stuff that they know of, other aspects that are not necessarily laid out for in public for obvious reasons. So we can play a supporting role and say that we are there for you like whenever you need as support. So ours is more of a supporting role, but the actual lead main role is the family. So yeah, it's best left to their judgment, and we trust that they will take the right steps at the right time. That's all I had to say. perfect deal, sir. Thank you so much. And Like I yeah, said, thanks for having Professor. I think I'll go to the listeners. So, but thanks thank you, sir. for Thank having me you. on the show. Thank you for coming, sir. Thank you so much. Thank you. And the second point of what Arun ji said, अरुण जी का कमेंट मैं अगर आप वापस डाल लें तो उसमें एक और चीज थी. लेट मी गो एंड सी दैट. हाँ, so I answered the first one about the court. The second thing is SSR's father can join the protest. I completely agree. His age is such, if I'm not wrong, he's 76 years of age. But if anybody wants justice, it's his father, his sisters, the family. But of course, yes, you can obviously respectfully ask the father, okay, sir, if you want to join, there is a protest which is happening in Delhi. If you would like to join, सो ये रिक्वेस्ट हमेशा आप कोई भी कर सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें. ऑफ कोर्स यू कैन आस्क, और अगर उनकी हेल्थ अलाउ करती है, अगर उनका मन करता है, अगर वो आना चाहते हैं, तो ही इज मोस्ट वेलकम. बट कीपिंग इन माइंड हिज हेल्थ फर्स्ट. तो आई होप आई वाज एबल टू आंसर दैट. Maki, Dual sir, thank you so much for coming here. I have my own reservations as well when I started coming on spaces or on live YouTube. For all those people
who don't know, I have a speech problem as well. कभी कभी you know अब तो खैर लेटर लाइफ में काफ़ी ठीक हो गई है, बट आई हैड दिस प्रॉब्लम एट माय अर्ली एज, एंड मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी, एंड उसके बाद slowly and slowly I started reading magazines loudly, newspapers, articles loudly, front of the mirror. I mean, पहले की बात बता रहा हूँ, काफी सालों के पहले. और उसके बाद, you know, the person tends to get very nervous and conscious. So I'm working every day, daily. अभी भी मैं कभी कभी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ, थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, एंड it's very human. एंड तो तभी मैं कहता हूँ कि अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाए तो यू नो while speaking, so I apologize for that. So but sometimes it happens. तो चलिए, या विनोद भाई, अभी आजकल क्या हुआ कि विनोद भाई, पहले मैं काफी करता था. पता नहीं आप पहले ज्वाइन करते थे कि नहीं स्पेसेस. पहले मैं करता था, और स्पेसेस रेगुलरली एवरी डे. एंड उसके बाद थोड़ा काम का प्रेशर इतना हो गया that by the time I come back, I hardly get any time. अभी नेमिया सलगावकर का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ आके थोड़ा बात कर लेता हूँ. बट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेसेस ज्वाइन नहीं करूंगा. अभी कुछ ही देर हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं जो मैंने कुछ स्पेसेस नहीं ज्वाइन करी. मेरे को मालूम भी नहीं स्पेसेस में मतलब क्या हो रहा है. आई होप एवरीथिंग इज ओके. But doesn't mean that I would not join spaces. I will definitely join, and I will talk about SSR and how to go about uh, in SSR case as far as digital protest is concerned or ground protest is concerned. See, I will again say both both have its own importance, and hats off to all those people who go on ground, keeping that always in mind. So, hello Simran ji, कैसी हैं आप? आ गए आप? Good to see you. So तो बस और कोई बात नहीं, आज मेरे को इतनी सी बात करनी थी. जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट व्हाट exactly is the importance of tagline or hashtags for all those people who are, you know, uh, attached to this movement and doing a digital protest, digital awareness for Sushant Singh Rajput. Mimia Salgaonkar has written, please listen to the song Ja Nisar sung by Sushant Singh Rajput himself, uploaded on Sushant Ki Yodha today morning, whenever you have time. Thank you. So guys, so please go ahead and listen to Sushant Ki Yodha चैनल पे. जो यही चैनल है, जा निसार सुशांत ने अपनी आवाज़ में ही गाया है. और मीमिया सलगावकर ने अच्छी, द कॉम्पोजिशन इज गुड. मैंने सुना था और मीमिया ने मुझे भेजा था, मैंने सुना. इट्स रियली रियली नाइस. सो प्लीज डू लिसन टू दैट. एंड so that's all I wanted to talk to you about the importance of tagline and hashtag today, about a little bit about movement, and just have a general chat. And of course, in coming days we'll be having some more topics related to the case only. I don't want to get into any gossip or any masala or any of that. That's all. So thank you so much for joining. And जाने से पहले मैं दोबारा ये बोलूँगा, सुशांत, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं. और हम लोग तब तक जुड़े रहेंगे जब तक तेरे गुनहगार पकड़े नहीं जाते और जेल के अंदर नहीं जाते. सो थैंक यू गाइस फॉर listening to me, Duil sir, and for joining the live. Thank you, Mimia Salgaonkar, for giving me this opportunity to speak. Thank you, guys. When the going gets tough, only the tough gets going. Sushant Singh Rajput
chose you for a reason. You are his voice, his heart, his soul. Together, united, we are stronger than ever. Let's go and get justice for Sushant Singh Rajput.